Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. The Samsung Galaxy M70 will launch somewhere in the first half of 2020, and when you compare to the company's previous M series models, the Galaxy M70 will come with several new features and these will change the smartphone aesthetics and design. A lot of details have been leaked for the Samsung Galaxy M70 so far as the ball start to roll for the device launches. The Samsung Galaxy M सीरीज काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है सैमसंग के लिए, जो बजट फोन के लिए काफी बेहतरीन स्मार्टफोन लेके आते हैं और सभी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को कड़ी टक्कर प्रोवाइड करती है उसी सेम प्राइस में आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करके। आप अगर गैलेक्सी M70 के बारे में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको ये वीडियो पे द गैलेक्सी M70 के बारे में सभी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में बताएंगे, जो आपको ये फोन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M70 पे आपको मिलेगा एक 6.6 इंच फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले विद रेजोल्यूशन ऑफ 1080x2360 डिस्प्ले पिक्सल। ये फोन पे आपको 3 बेजल के साथ साथ यहाँ पे एक्सट्रीम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल सकता है, जो होगा ऑलमोस्ट 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में। द रूमर सजेस्ट द सैमसंग गैलेक्सी M70 पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो होगा एक ऑप्टिकल टाइप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो इसी मिड रेंज फोन के लिए काफी हाई फीचर है। सैमसंग गैलेक्सी M70 की बैटरी ये फोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और अगर देखा जाए ये फोन पे आपको काफी पावरफुल बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगा, जो होगा 6250 मिली एम्पियर बैटरी, जो ये फोन को आराम से एक दिन की बैटरी बैकअप देने के साथ साथ इसमें आपको क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। गैलेक्सी M सीरीज स्मार्टफोन ऑलरेडी हैज ए ग्रेट बैटरी लाइफ, so the extra capacity of the Samsung Galaxy M70 battery should improve things all the more. The Samsung Galaxy M70 will be one of the few budget phone to have the Gorilla Glass 5 protections. So let me know your thought. Are you excited about this Samsung Galaxy M70 or not? So let me know your thought on this and I will see you guys tomorrow. Peace out.